Good morning, my dear friends. So, today we are starting with a new chapter, that is life process. In this chapter, we are going to include the various life processes that are essential for us. It includes nutrition, that is digestive system, then respiration, transportation and excretion. In this chapter, we are going to learn about the process that are essential for our survival. So, shall we start now? Take out your pen, a notebook and start writing the important points. Fine? So, here we are starting. First, we have to learn about the criteria that can decide that whether something is alive or not. How can we know that a thing is alive or dead? The most important criteria is movement. All living things move without the help of any external help. Some movements are easily visible, like the movements of body parts, and some are not easily visible, like our molecular movements. The molecular movements in cells and tissues is necessary for all our life processes. So, how can we decide that something is alive? We can decide that if our organism is moving, then it is alive, otherwise it is dead. What are life process? Life process are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. Means हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. ये हमारी लाइफ की क्या होती हैं? बेसिक प्रोसेस होती है और इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. व्हाट आर दीज? These are nutrition, respiration, transportation and excretion. These 4 steps are necessary for our survival. What are they? First is nutrition, second respiration, then transportation and excretion. Now we will discuss each of them in detail. Their definitions first. First is nutrition. Nutrition is the process of taking food. What is nutrition? Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body for life processes. So जो भी हम खाना खा रहे हैं, what is that? That is a part of nutrition. Why do we eat food? हम nutrition क्यों लेते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? To meet, we eat food to meet our energy requirements. Why do we eat food? We eat food to meet our energy requirements. You all know that energy is required to carry out all the activities for our survival. जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है, what is required term? The required term for that is energy. So, what is the definition of nutrition? Nutrition is the process of taking food. In another ways, we can say that nutrition is a process by which an organism obtains nutrients from food and utilize them to obtain energy. What I said? That nutrition is a process by which an organism obtain nutrients from the food. कि वो फूड से क्या ले रहा है? न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर रहा है. ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? न्यूट्रिशन. द सेकेंड इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज द सेकेंड? द सेकेंड इज रेस्पिरेशन. Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. What happens in the respiration? In respiration, the food is burnt in the cells of the body and
energy is released. Fine. Next step is transportation. Transportation is the process by which food, oxygen, water and waste products are carried from one part of the body to the other. जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन. जैसे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. उसी तरह हमारी बॉडी में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है. देन लास्ट इज एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं वो सब क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं. नाउ we will discuss about these 4 processes in detail in this chapter. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इन्हीं सभी प्रोसेसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. The systems associated with them, their organs and their functions we are going to study in this chapter. Okay, so shall we move forward? The first is nutrition. What is nutrition? Nutrition is the process of taking food by an organism. What is nutrition? Nutrition is the process of taking food by organism and its utilization by the body to build the body. मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो फूड का क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है और उसको बॉडी बिल्ड करने के लिए, बॉडी के लिए जो यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन यूज? न्यूट्रिशन से जो भी बिल्डअप होगी बॉडी, ग्रोथ है, रिपेयर है, डैमेज्ड पार्ट्स की और एनर्जी, वो सभी रिक्वायरमेंट्स हमारी कौन पूरी करता है? न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन वी कैन से दैट न्यूट्रिशन फुलफिल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोसेस फुलफिल करती है. लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर. हम सभी किन रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं? वी डिपेंड अपॉन फूड, वाटर एंड एयर. Now modes of nutrition, how we obtain nutrition. हम न्यूट्रिशन का इंटेक कैसे करते हैं? That is called modes of nutrition. First is autotrophic nutrition and the second is heterotrophic nutrition. In previous classes also you have learned about it. So again revise this topic. Autotrophic nutrition is nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. What is this? Autotrophic nutrition में क्या करेंगे? जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. वी विल डिस्कस अबाउट इट ऑल्सो इन दिस चैप्टर. फर्स्ट लुक एट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? It is the nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants. Here written directly or indirectly. What is the meaning of it? Can anybody guess what is the meaning of this? Yes, directly means herbivorous animals. Herbivorous animals directly eat the plants, so they are direct. We can see that herbivores are directly dependent upon autotrophs, while on the other hand the carnivores or secondary consumers indirectly depends upon the autotrophs. How? Because they don't eat grass or the food prepared by the plants.
What they eat? They eat herbivorous animals. They eat herbivorous animals. In this way, we can say that herbivores are indirectly dependent upon autotrophs. Herbivores किस तरह डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली. और कार्निवोर्स किस तरह डिपेंड करते हैं? इनडायरेक्टली. herbivores depend directly and carnivore depend indirectly. Clear? Carnivore depend indirectly and herbivore depend directly on the autotrophs. Let's discuss the types of heterotrophic nutrition now. There are three main types of heterotrophic nutrition. What are they? They are saprophytic, parasitic and holozoic. What are they? They are saprophytic, parasitic and holozoic nutrition. First is saprophytic nutrition. It is nutrition in which organisms get their food from dead and decaying organisms. How they get their food? They get their food from dead and decaying organisms. They break down the food material outside their body and then absorb it. वो क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी के बाहर उसको ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल्स को और उसके बाद एब्जॉर्प्शन करते हैं. So what is this type of nutrition? This type of nutrition is called saprophytic nutrition. What are its examples? Its examples are mushroom, bread mold, yeast and some bacteria. What you have to do? First you have to make a table and then differentiate between all these three types of nutrition. Fine? What is the second? The second is parasitic nutrition. What is the second? The second is parasitic nutrition. It is the nutrition in which organisms get their food from living organisms without killing them. मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग दैम. एग्जाम्पल्स: कसकटा, orchids, ticks, lice, leeches, roundworm, tapeworm, plasmodium, etc. तो ये क्या करते हैं? होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उसको बिना किल किए अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं. The third is holozoic nutrition. What is third? Third is holozoic nutrition and it is the most common mode of nutrition. सबसे जो कॉमन मोड है वो कौन सा है? Holozoic nutrition. It is the nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb it. Directly वो food को क्या कर रहा है? Intake कर रहा है और उसके बाद उसको digest करने के बाद absorb करता है. Examples are amoeba, paramecium, birds, fishes, humans, etc. Let's move to the next topic. The next topic we are going to study is nutrition in plants. We have already studied that plants show autotrophic mode of nutrition. What they show? Plants show autotrophic mode of nutrition. They prepare their own food with the help of photosynthesis process. कौन सी प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और यूज़ किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट,
which is stored in the form of starch. जो भी food prepare किया है वो किसकी form में store होता है? It stores in the form of starch. And which gas is released in this process? Oxygen gas is released in this process. Fine. सभी ने ये reaction previous classes में पढ़ी है. What is the equation of photosynthesis? 6CO2 plus H2O. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, what they form? They form carbohydrate. It is the formula of glucose. Which formula it is? It is the formula of glucose. Glucose is formed water and then oxygen is released into the atmosphere. Now what is the process of photosynthesis? Photosynthesis takes place in three main steps and you all have to learn these three steps. सभी को क्या करना है? ये three steps learn करने हैं. The three steps of photosynthesis include first, absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll क्या कर रहा है? जो light energy है उसको absorb कर रहा है. Second, conversion of light energy into chemical energy and splitting up of water molecules into hydrogen and oxygen. सबसे पहले क्या हुआ? जो chlorophyll है, chlorophyll is present in leaves. It is a green pigment. Chlorophyll क्या होता है? Green pigment होता है, leaves में present होता है. ये किसका absorption करेगा? Light energy का. अब जो leaves ने light energy का absorption किया है उसको ये किस में convert करेगा? Chemical energy. The light energy that is absorbed is converted into chemical energy and water molecules are splitted in hydrogen and oxygen. The third step, reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrates. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? रिडक्शन होगा. फर्स्ट चैप्टर में हमने रिडक्शन रिएक्शन रीड करी है. व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन का जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स. सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट क्या किया? क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. सेकेंडली जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में. और वाटर मॉलिक्यूल्स का किस में ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. एंड आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and we get carbohydrate. This is the three steps you must have to learn. Okay, now move forward. This is the photosynthesis process. In this process what is used? Carbon dioxide and water are used in the presence of chlorophyll and sunlight. And what is released? Oxygen gas is released and glucose is formed. Now what is chlorophyll? You all know that chlorophyll are the green pigments present in the leaves. If we observe a cross section of a leaf under a microscope, we can see cells containing green dot-like structure called chloroplast which contain chlorophyll. अभी तक जो स्मॉलर क्लासेस है उसमें तुमने पढ़ा है कि लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. अब एज यू आर इन 10th you should know that chlorophyll is contained in green dot-like structure that are called chloroplast. See here. See here in what type of green dot structures you are seeing? Green dot structures are chloroplast. These type of structures are called These type of structures are called chloroplast and it contains chlorophyll.
तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट किसका पोर्शन होता है? लीव का। किस पे प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट? लीव्स में प्रेजेंट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फाइन, यू कैन इजीली सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. See, here a closer view is given to you for a better understanding. This is the upper epidermis. Epidermis means skin. We can relate epidermis word with the skin. Upper epidermis of leaf. Then mesophyll. After that, lower epidermis. This is the complete structure of leaf if we see it under a microscope. There is a wax cuticle on the outer surface to prevent it from any type of damage, and its surface is also slippery because of its wax coating. Then palisade mesophyll, spongy mesophyll and wax cuticle also there. Now here you are seeing stoma. Are you seeing stoma? What is this? Let's study it. This is also a broader look of your leaf under a microscope. Stomata open to allow carbon dioxide to enter a leaf and water vapor to leave. In last slide, I have asked you a question about the stoma. What are stoma or what are stomata? Stomata are the tiny pores that are present in the leaves through which exchange of gases takes place. What are stomata? These are tiny pores. These are tiny pores that are present in the leaves through which exchange of gases takes place. Each stoma has a pair of guard cells which controls the opening and closing of the stomatal pore. Means what I said, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है, व्हाट आर दे आर कॉल्ड स्टोमेटा. एंड ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स होते हैं, तो गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी उसके कारण क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो जाता है. व्हेन द वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर कर रहा है, इट स्वेल्स, वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं. एंड द पोर ओपन, एंड व्हेन द पोर्स ओपन हो गए तो इसके कारण क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी. एंड व्हेन द गार्ड सेल्स लॉस वाटर, जब गार्ड सेल्स में पानी की कमी हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं. एंड द पोर क्लोजेस, और जो पोर है वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. तो इस तरह लीव्स में कंटिन्यूसली क्या चलता रहता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. This is the broader look of your stomata. Guard cell, chloroplast. Are you seeing it? Yes. Water diffuses into guard cells which causes them to open. जब भी water डिफ्यूज़ होगा गार्ड सेल्स के अंदर, वाटर जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, तब वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. ऑन हॉट और ड्राई डे द गार्ड सेल्स हैव लेस वाटर, दे रिलैक्स एंड द स्टोमा क्लोज. जब हॉट और ड्राई डेज होते हैं तब स्टोमेटा में क्या होगा? बहुत लेस वाटर होगा गार्ड सेल्स में, और इसके कारण जो स्टोमा होता है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है. सी हियर, दीज आर गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल्स में हॉट और ड्राई सीजन में क्या होता है? बहुत कम वाटर होता है, और कम वाटर के कारण वो क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं. और जैसे ही वाटर उनके पास आता है तो वो क्या कर जाते हैं? ओपन हो जाते हैं. वाटर कम हुआ तो श्रिंक हो गए, वाटर बढ़ गया तो एक्सपैंड हो गए. फाइन. नाउ this is an activity to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. What you have to do? You have to take 2 potted plants of the same size and keep them in a dark room for 2 to 3 days so that all the starch is used. Then keep the plants on separate glass plates
Keep a watch glass containing some potassium hydroxide near one plant to absorb carbon dioxide. Cover both the plants with the bell jars and seal the bottom of the jars with Vaseline to make it airtight. Keep the plants in sunlight for 3 hours, then take a leaf from each plant and test for starch. The leaf of the plant kept in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of starch. This shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Now I am going to show a video to you for the better understanding of this activity. So be ready for that. So here we are presenting an activity to show that carbon dioxide is necessary for plants or not. What are the requirements? 2 potted plants of same size, glass plate, bell-shaped jar, watch glass and a beaker. You also need a petri dish, Bunsen burner, forceps and dropper. The solutions of potassium hydroxide, ethyl alcohol, iodine, water. Now the procedure: take 2 healthy potted plants A and B which are nearly the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of plant A. Potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. Cover both the plants with the separate bell jars. Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plates so that the setup is airtight. Keep the plants in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant. Put the leaves in separate beakers containing ethyl alcohol. Place the beakers in boiling water and then heat them. Alcohol will decolorize the leaves by dissolving the chlorophyll present in them. Now wash the leaves with water. Then put iodine solution on both the leaves. Check the leaves for the presence of starch by iodine test. Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? What will be your answer? The leaf from pot A remains unchanged in the presence of iodine. Thus, we can see that starch is not present in it. While the leaf from pot B turns bluish in the presence of iodine, thus starch is present in it. What can you conclude from this activity? That potassium hydroxide placed near the pot A absorb all the carbon dioxide, hence plant A cannot perform photosynthesis, whereas plant B does normal photosynthesis by utilizing carbon dioxide from the surrounding air. The leaf from pot B therefore shows the presence of starch. Thus, this experiment is necessary for the production of food, that is photosynthesis. So, I think this activity is clear to all that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Now move forward. We can also do this activity to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. Okay, go to your science lab and perform this activity. Now nutrition in animals. In this class, we have studied about the life processes that are required for our survival. Then
definitions, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, types of nutrition, and now we are moving forward. That is the topic is nutrition in animals. Nutrition, the definition is clear to you. Now what you have to do today, you have to revise all the topics that we have discussed in this class, that are definitions, introduction and photosynthesis process. You have to learn all these, and in next class we will going to start the nutrition in animals. Fine. So have a nice day and stay safe.